जय श्री माता जी। आप सभी साधकों का आज के प्रातःकालीन ध्यान धारणा में हृदय से स्वागत है। हम सब सामूहिकता में श्री माता जी को प्रणाम करेंगे। कुंडलिनी उठाकर स्वयं के कवच को धारण करेंगे। आवश्यकता अनुसार हमें सुनिश्चित करेंगे हमारे लेफ्ट साइड में 1, 2 या 3 कैंडल हो। हम सभी अपना राइट हैंड लेफ्ट सहस्त्रार पे रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी, कृपा कर हमारे मस्तिष्क को आप अपने दैवी विवेक से संचालित कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारे मस्तिष्क में आइए। राइट हैंड मध्य अनहद पर, सेंटर हार्ट पर प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे हृदय में आइए। हमारे हृदय को आप अपने निर्मल प्रेम से भर दीजिए। हमारे हृदय में सभी कटुताओं को दूर कर, सभी द्वेष भावनाओं को दूर कर हमें आपके निर्मल आनंद में उतार दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी संपूर्ण सामूहिकता को हम स्वयं के हृदय में धारण कर सकें, ऐसा विशाल हमारा हृदय बना दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारे हृदय में आइए। दोनों हाथ श्री माता जी के समक्ष हम 3 बार ओंकार का उच्चारण लेंगे। मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से श्री विराट उच्चारण के साथ हम स्वयं की कुंडलिनी माता को आदि कुंडलिनी माता स्वरूप में एकाकार कराने की श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात हमारी गौरी कुंडलिनी माता हैं। श्री माता जी, कृपावंत होकर
हमारी कुंडलिनी माता को आपके आदि कुंडलिनी स्वरूप से एकाकार करा दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारे संपूर्ण चित्त को आपके श्री विराट स्वरूप से एकाकार करा दीजिए। चित्त के एक भाग को श्री विराट से सहस्त्रार, सहस्त्रार से रीढ़ की हड्डी द्वारा भूमि माता में ले जाएंगे और दोनों हाथों को हम भूमि माता पे रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री विराटांगना विराट हैं। हमारे अंदर की समस्त जड़त्व, लिथार्जी, इनर्शिया, जो कुछ भी असहज है, वह कृपा कर आप भूमि माता में विलीन करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, मेरे अंदर का जड़त्व, मेरे अंदर का अंधकार, जो मुझे आज भी आपका गणेश बनने से दूर करता है, ऐसी सभी नकारात्मकता को आप भूमि माता में विलीन करा दीजिए। चित्त को श्री विराट से सहस्त्रार, सहस्त्रार से विशुद्धि, विशुद्धि से दोनों कंधों एवं हथेलियों के माध्यम से भूमि माता में ले जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप कृपावंत होकर मुझे मेरे मूल स्वरूप के आनंद में उतार दीजिए। मुझे मेरी सभी व्याधियों से मुक्त कर, अंधकार से दूर कर, आपके आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में उतार दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप अपने भूमि माता स्वरूप में अपने भू स्वरूप के सभी आशीर्वादों को हमारे अंदर स्थित करा दीजिए। राइट हैंड श्री माता जी के समक्ष, लेफ्ट हैंड भूमि माता पर हम स्वयं की गणेश की जागृति के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे मूलाधार चक्र के श्री गणेश, हमारे गौरी कुंडलिनी माता के श्री गणेश, आप संपूर्णतः जागृत करा दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारे नाभि चक्र के श्री गणेश, हमें संपूर्णतः आपके विश्व निर्मल धर्म को धारण कराने वाले श्री गणेश, आप संपूर्णतः जागृत करा दीजिए। हमें सदैव आपके समाधान, ध्यान एवं ध्यान को धारण करने की शक्ति में बनाए रखने वाले श्री गणेश, आप संपूर्णतः जागृत करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे स्वादिष्ठान चक्र के श्री गणेश, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी के श्री गणेश, हमें संपूर्णतः आपकी शुद्ध विद्या, शुद्ध ज्ञान एवं शुद्ध इच्छा में बनाए रखने वाले श्री गणेश, निर्मल चित्त शक्ति, निर्मल भक्ति एवं विश्व बंधुत्वता में स्थित रखने वाले श्री गणेश, आप संपूर्णतः जागृत करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात हमारी गुरु माँ है। कृपा कर हमारे भवसागर में स्थित 10 गुरुओं के श्री गणेश, आप संपूर्णतः जागृत कर हमें आपके गुरु ज्ञान में स्थित करा दीजिए। आप हमें हमारे गुरु पद में स्थित करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे अनहद के श्री गणेश, माँ जगदम्बा के श्री गणेश, हमें संपूर्णतः निर्भय बनाए रखने वाले श्री गणेश, आप संपूर्णतः जागृत करा दीजिए। श्री माता जी, आप ही करता है, आप ही भोगता।
कर्म से होने वाले सभी भय से, सभी नकारात्मकता से, जो जलन ईर्ष्या द्वेष की है, हमें इसके मोह के जाल से मुक्त करा दीजिए। हमें शाश्वत तत्व सत्य कि हम आपके बच्चे हैं, आप साक्षात हमारी माता हैं, इस सत्य में हमें स्थित करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी संपूर्ण सामूहिकता को हम स्वयं के हृदय में निर्मल प्रेम से धारण कर सके, ऐसा विशाल हमारा हृदय बनाने वाले श्री गणेश आप संपूर्णतः जागृत करा दीजिए। श्री माता जी कृपा कर हमारे विशुद्धि चक्र के श्री गणेश हमें संपूर्णतः माधुर्यता में स्थित रखने वाले श्री गणेश आप संपूर्णतः जागृत करा दीजिए। श्री माता जी कृपा कर हमारे आज्ञा चक्र के श्री गणेश हमें संपूर्णतः आपके क्षमा ज्ञान में बनाए रखने वाले श्री गणेश आप संपूर्णतः जागृत करा दीजिए। श्री माता जी कृपा कर हमारे सहस्त्रार के प्रत्येक पंखुड़ी के श्री गणेश आप संपूर्णतः जागृत कर आपके संपूर्ण आदि शक्ति स्वरूप में हमारे सहस्त्रार में विराजिए। हमारे सहस्त्रार को आपके स्थित होने के लायक बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारे सहस्त्रार के ऊपर उपस्थित सभी पीठों के श्री गणेश आप संपूर्णतः जागृत कर हमें आपकी श्री विराटांगना विराट शक्ति में स्थित करा दीजिए। चित्त को संपूर्णतः श्री विराट में स्थित करते हुए चित्त के एक भाग को मूलाधार चक्र की राइट पेटल पे लाएंगे। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हैं। आप अपने कार्तिकेय स्वरूप में हमें सभी प्रकार के स्वभावादी दोष, जड़त्व एवं असहजताएं जिनसे हम जाने अनजाने सामूहिकता को ठेस पहुंचाते हैं, स्वयं आपके विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। श्री माता जी ऐसे सभी स्वभाव दोष जो हमारे परिवर्तन में आड़े आ रहे हैं, हमें उनसे मुक्त करा दीजिए। आप अपने कार्तिकेय स्वरूप में ऐसे सभी स्वभाव दोष जो 84 दशलख योनियों से चले आ रहे हैं नष्ट करा दीजिए। मेरे और मेरे वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार की राक्षसी प्रवृत्तियों से मुझे मुक्त करा दीजिए। हमें आपके श्री कार्तिकेय जी जैसा सत विवेकी समय सूचकता के गुणों में स्थित करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आप अपने कार्तिकेय स्वरूप में हमारी अबोधित शक्ति का हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। मंत्र लेंगे, श्री कार्तिकेय साक्षात राक्षसंत्री साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात राक्षसंत्री साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। लेफ्ट हैंड श्री माता जी के समक्ष, राइट हैंड भूमि माता पर। चित्त को मूलाधार चक्र की लेफ्ट पेटल पे लाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमें आपकी अबोधित शक्ति के आनंद में स्थापित करा दीजिए। हम संपूर्णतः आप पे निर्भर हो सके,
आप पर समर्पित हो सके, हमें ऐसा आपका अबोध बालक बना दीजिए। श्री माता जी कृपा कर हमारे मूलाधार चक्र की बैक पैटल पर आप हमें आपकी पवित्रता शक्ति का अभेद्य कवच प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारे मूलाधार चक्र की फ्रंट पैटल पर आप हमें आपकी शुभता मांगल्यता में स्थित करा दीजिए। श्री माता जी कृपा कर हमें आपका संपूर्ण गणेश जी की शक्तियों में जागृत कर आपका आनंदमयी यंत्र बना दीजिए। चित्त को मूलाधार चक्र की लेफ्ट पेटल पे लाएंगे। प्रार्थना करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ हैं। श्री माता जी कृपा कर आप अपने भैरवनाथ स्वरूप में हमारी ईड़ा नाड़ी के प्रत्येक अंधकार को नष्ट कर, दूर कर आपके भैरवनाथ स्वरूप के सभी आशीर्वादों में जागृत करा दीजिए। श्री माता जी कृपा कर आप अपने भैरवनाथ स्वरूप में हमारे बाएं मूलाधार चक्र में, लेफ्ट मूलाधार चक्र में जो कोई भी हवस एवं वासना आदि दोष है, जो मेरे माता पिता अथवा मेरे मातृकुल पितृकुल से चले आ रहे हैं, जो मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पति पत्नी और इन सभी के मातृकुल पितृकुल से चले आ रहे हैं, वह कृपा कर आप भूमि माता में विलीन करा दीजिए। श्री माता जी कृपा कर हमारे लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र में स्थित सभी प्रकार की अशुद्ध विद्या, अशुद्ध ज्ञान एवं अशुद्ध इच्छाएं जो मेरे माता पिता अथवा मेरे मातृकुल पितृकुल से चले आ रहे हैं, जो मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पति पत्नी और इन सभी के मातृकुल पितृकुल से चले आ रहे हैं, वह कृपा कर आप भूमि माता में विलीन करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारे लेफ्ट नाभि चक्र में स्थित सभी प्रकार के अशुद्ध धन, नकारात्मकता, जड़त्व एवं असमाधानता जो मेरे माता पिता अथवा मेरे मातृकुल पितृकुल से चले आ रहे हैं, जो मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पति पत्नी और इन सभी के मातृकुल पितृकुल से चले आ रहे हैं, वह कृपा कर आप भूमि माता में विलीन करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर आप अपने भैरवनाथ स्वरूप में हमारे सबकॉन्शियस, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में आ चुकी सभी नकारात्मकता से हमें मुक्त करा दीजिए। हमें शांत कर, सौम्य कर आपके बाल भैरव स्वरूप की अबोधिता शक्ति में हमारी ईड़ा नाड़ी को जागृत करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं, भद्रकाली, काली कल की है। श्री माता जी कृपा कर हमारे ईड़ा नाड़ी में उपस्थित सभी भूतकाल की दोष बाधाओं से हमें मुक्त कर हमारे अंदर अभी भी हमारी क्रुद्ध महाकाली को शांत कर, सौम्य कर ग्रह लक्ष्मी स्वरूप में संपूर्णतः हमारी लेफ्ट नाभि में जागृत करा दीजिए। हमें आपकी अलहदाई, आनंददाई, ममतामयी, करुणामयी महाकाली बना दीजिए। आपके उन महाकाली स्वरूपों में, गुणों में स्थित कर हमें आपकी महालक्ष्मी स्वरूप में जागृत करा दीजिए। हम आपके प्रदान किए हुए अतुल्य आत्म साक्षात्कार में संपूर्णतः स्थित हो सके, उसके लिए हमें आपकी महालक्ष्मी स्वरूपी शक्ति में स्थित करा दीजिए।
राइट हैंड श्री माता जी के समक्ष, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, चित्त को मूलाधार चक्र की राइट पेटल पे लाएंगे। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हैं। नाड़ी में आपके महासरस्वती स्वरूप के सभी आशीर्वाद जागृत करा दीजिए। उनकी सभी सृजनात्मक एवं रचनात्मक गुणों से हमें गुणवान बना दीजिए। इन गुणों से संपूर्णतः आपकी सामूहिकता को हम आनंद प्रदान कर सकें, ऐसा हमें बना दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे पिंगला नाड़ी में उपस्थित सभी असंतुलन को आकाश तत्व में खोल दीजिए। हमें श्री हनुमान जी जैसी अनन्य निर्मल भक्ति में स्थित कर उनकी नवधा सिद्धियों में जागृत करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी में आपके सभी आशीर्वादों में हमें स्थित कर हमारी क्रिया शक्ति को आपके आशीर्वाद से जागृत करा दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही करता है, आप ही भोगता। हमें इसके सत सत विवेक में स्थित करा दीजिए। चित्त को संपूर्णतः सुषुम्ना मार्ग द्वारा सहस्त्रार से पुनः श्री विराट में स्थित करेंगे। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें आपके श्री विराट स्वरूप में स्थित कर आज के आत्म साक्षात्कार में हमें द्विगुणित करा दीजिए। हम आपकी अमृतवाणी को संपूर्णतः आत्मसात कर सके, उसके सत सत विवेक में जागृत हो सके। हमें इस अवस्था में आपकी अमृतवाणी को आत्मसात करा दीजिए। In the area of Vishuddhi,
In the Gita, Sri Krishna has described the area as Kshetra. And the one who knows the area is called as Kshetrajna. Jna, yesterday I told you, Jna Agya means the one to know on your central nervous system. So the one who is the knower of that area is the Kshetrajna. Today we are going to know about the Hamsa Chakra. That is the area of between the two eyebrows, Brukutis, they are called. This one is placed at the base of the brain. Which is called as Murdha. And this part is the complete controller of the whole of the base of the brain. Again I say base of the brain. And that is a part of the Vishuddhi still. Which is an extremely important center as far as the human awareness is concerned. Because these two nadis, Ida and Pingala, before entering into Agya and giving crossing each other, part of them crosses over this chakra of Hamsa. So when the ego and superego develop in our brain and cover our limbic area, from both the sides the strands which are coming out of the Vishuddhi sit on them. So they also control these two institutions from outside. For example, it crosses like this, goes up like that from Hamsa, and then some strands. Then the others go up again and cross like this and form ego and superego. So from the backside, on top of them, these two strands go and sit. You all know that Hamsa Chakra gives you discretion. But still we do not understand what do we mean by discretion. The first and the foremost important center within us is the Muladhara Chakra.
we do not have the proper discussion about Muladhara Chakra. We get into wilderness, I should say, or we open the doors of hell for ourselves. As you know that only the Ida Nadi starts from the Muladhara. That means is the desire, power of desire within us starts from Muladhara. But it's not the mental, which is the Pingala Nadi, which starts from Muladhara. It starts higher. So to have a complete understanding about a child is crying, please take away the child. Yesterday again same thing happened. Now this is indiscreet. Continuing with the child all the time. Yesterday was the same thing. Immediately you should take out the child. In the meeting any child is crying, immediately take out the child. There's something wrong with the child. Immediately take out the child. Again it is discussion. So one thing one has to know that Muladhara Chakra cannot be controlled by our mental activity. But if you shift it to the mental activity, then the control over Muladhara is completely lost. Apart from whatever has happened in the West, Muladhara Chakra is all gone into the mental activity of human beings. It is so much discussed, talked, it is so much described, written down, so much read, so much put into our heads that it has become a mental activity. So Muladhara doesn't act spontaneously as it has to act. That's why there are problems that people cannot produce children. So many become impotent very early because it is used not by the power of desire but by mental activity. Shift. Now you see the light here. It's burning there because there is oil and there is a wick. It is burning. But instead of this oil, you put just water. Will it burn? It won't. Because water is not going to nourish this light. So the more mental activity you have, your Muladhara gets spoiled and it becomes uncontrollable. But if it is left to your desire, so it becomes spontaneous.
This is a fundamental principle that is missing in the Western thinking, I think. That whatever is spontaneous, they leave it to the mental activity. Wherever the mental activity is to be used, you should use mental activity, and wherever your desire and emotions are to be used, you must use your desire power. Also, it is spontaneous, though it should not be an obsession. Any obsession cannot be spontaneous. It just at a moment you have the desire. That's all. But all the time if this it's in your mind, that means you are using water to have the fire. Same about the Swadhisthana chakra. Swadhisthana is for creativity. Anything you can create. You can create a sari, you can create a beautiful design, pattern, you can create a beautiful art or anything. But as soon as you put it on a mental level, it's finished. Also in the West, too much discussion is about the art. This is not art, that is not art, this should have been like this, that should have been like this. I mean, its creativity is spontaneous. Whatever the artist wants to produce, let him produce. Who are you to judge and criticize? You cannot appreciate anything unless it is brought to the mental level. So now, we have critics. And the artists are not spontaneous, they are afraid, they only think, what will the critics say? Even when I am writing the book, when I give it to some Sahajogis to read, they say, Mother, if you write like this, then they'll say like this. I said, let them say, who cares? So then, a critic should criticize and say, this is not all right, this is not an art because this is such, this is such. So the artists are finishing, art is finishing. Now what is left are critics. So now they don't know what to do with their profession, so they are criticizing each other. So we have only critics criticizing each other. But there is no art now. What to criticize? And art has to be now made into money. So the critics must certify. It's so man-oriented, the whole programming of these critics is, that it is never an art. They draw one line and say, now this is art, all right. If the critic says it's art, you have better accept it is an art. What is so artistic about a life? Then again mental, it's a lonely person standing there, this, that. It should be spontaneous. Why to describe an art? So the mental level is so alert and is all the time trying to see things according to certain norms. All these norms are created about something so spontaneous like sex, like art. All bathroom culture is decided by the brain. Nothing is spontaneous. It's such a joke, I tell you. So people become artificial. Art
art becomes artificial. Your Muladhara becomes artificial. Because it's all now man-made. All the spontaneity is lost. If you see any art from any country, just watch. Why must you react to it? Just watch. As Sahajogis, you should just watch. And the whole thing will start flowing through. Now this Greek tragedy of romanticism, then the romance of Romeo and Juliet, all is imaginary, is all mental. There is no spontaneity in it. And then you are accept only relationships when there is artificiality, even between husband and wife. Like the husband must bring a flower every day to the wife, show her a flower, as if she's a priest or something. And the wife must, I don't know what they do, all artificialities. And then he must say thank you 10 times to her. And she must say sorry to him 100 times. I mean, they are husband and wife, left and right side of a chariot. And then the men expect this should happen. Women expect this should happen. Men expect the women should be like men, and women expect men should be like women. Men are very particular about time, women are not. So women must be very particular about time, otherwise they think she's the worst person they have ever known. The woman is, say, more particular about her kitchen or maybe about her dress. So the man would get angry with her because she takes too much time to get ready. It's mutually so indiscreet that the relationship becomes absolutely absurd. There should be understanding that she is the left side and you are the right side, and both of you have to act according to your nature. On the contrary, you want to make somebody look so funny, because imagine a man becoming a woman and a woman becoming a man. It's a joke. But that's what is happening. Whatever the men are supposed to do, they cannot do. Whatever women are supposed to do, they cannot do. Whatever the children are supposed to do, they do not do. For example, children in the West will go on asking, why? Who are they to ask why? What is their growth? What is their intelligence? What is their maturity? They cannot be treated like a judge sitting in the court. They are children. But when they come to Sahaja Yoga, they lose that discretion. First, before coming to Sahaja Yoga, the husband and wife war all the time. Half steps are in the courts and half outside. After Sahaja Yoga, they cling to each other so much like glued together. It's impossible. So much so that for the wife's sake they will leave Sahaja Yoga. They ruin each other like that. They're glued together. Before Sahaja Yoga, they neglect their children, don't bother. After Sahaja Yoga, they are glued to their children.
then nobody can say a word against the child. The child can go and hit anyone, you cannot say anything. They ruin the child. So the discretion is lost completely in relationships. Whether it is sex, whether it is creativity, whether it is family, anything. That's the part of the Hamsa Chakra. Then we come to the Nabhi Chakra. In Nabhi Chakra also, we do not understand that eating is not such an important thing. Doesn't matter if you don't eat your food today, what does it matter? It's very important, you know. In Pune we had a puja, and we had Western children sitting there in the puja, and there were Indian children also. As usual, puja is always late. But it was in the evening, Sankrant puja. So the children, Western children, got up at 8 o'clock, whether it's puja or anything, and all marched on for their dinner. It looked very bad. Indians couldn't understand how can that be. But they had to have their dinner at 8. Supposing they don't eat their food at 8 o'clock, what will happen? Will they die? So in a way, we restrict children also by our own conditionings, and also we allow them to behave in a manner that they, as if they are very grown-up, matured people. We are so enamored by our children, as if to get children is something great. Anybody can have children, what's so great about it? You have to look after children, it's all right. But it doesn't mean that you should all the time dote upon them, think about them, worry about them, and nobody else. So if you have to enter into the limbic area, which is the Virata's place, which is the, I would say, from Vishuddhi to Hamsa, and then to your limbic area, into the Virata, then your interest must expand. So the other discretion should be that, am I only thinking of my child? Am I only thinking of my wife? Am I only thinking about them? Or I am worried about other children also. I am thinking about other children. I just tell you this because it's such a funny type of a concern we have. And you destroy your children also. By this kind of indiscreet concern. Like we had a school in India. And the children who stayed in Pune. I had my puja. I told them don't bring children because I knew these children are Western children. Not easy. They can't bear anything. But the children insisted and the teachers had to bring them. So the puja was over as usual, very late, about I think 11 o'clock in the night.
And there was no transport. And that's why I said don't bring them. So they had to get some sort of a truck, because these days we were not getting petrol, we were having a very bad time. So they had to go on the truck. It reached there by about 2 o'clock. Some of the fathers were staying in my house. Next day they said, Mother, our right heart is catching. I said, what is that? Such cruelty. I said, what cruelty? The children reached at 2 o'clock in the school. So what? Right heart is catching. What attachments? Your children, if they reach at 2 o'clock, what does it matter? Why are you so much concerned about it? They are realized souls. There is God who is looking after them. Why are you so much worried about them? Leave them alone. Send them to Indian school. Then the mothers are sitting there. Teachers don't like it. No one likes it. We are just gone there. Mothers. No school allows such nonsense. But in Sahaja Yoga they think they have a right. What right have they got? Have they paid for the school? Have they done anything for the school? What right have they got to go and sit in the school? So the discretion should be, we have to bring up our children according to Sahaja culture. The first of the principles of Sahaja Yoga is fortitude. Sahaja Yoga is not meant for such dainty darlings. You have to be soldiers of Sahaja Yoga. Your children have to be the soldiers of Sahaja Yoga, not the dainty darlings. It's not meant for them. Though they are born realized, you are ruining them by making them dainty darlings. You have to rough it out. You have to make them sturdy. You have to give them self-respect. You have to give them dignity and a fortitude. Parents. So, this left navi, right navi, especially the left navi, is a very big problem. Where the woman has to be a Grahalakshmi and husband has not to be a Romeo, but a husband. He has to see how his wife behaves, correct her. That is his job, his duty. He should not shirk it. Grahalakshmi is the woman who should know that she has the great responsibility of creating a very great society of Sahaja Yoga. She is not an ordinary woman. How many women got their realization before? But in Sahaja Yoga, if you find the ladies, you'll hardly find very few
who are really alert. Most of them are in trance condition. They don't know anything. They don't know anything. They don't know much of cooking. You ask them anything, they don't know anything. You talk to them, you feel as if they have taken some sort of a drug. Nothing goes into their heads. Sometimes one feels it's better I do it myself. Impossible. The alertness is gone. Because alertness that comes through your right side is wasted on nonsensical things. Attention is wasted on nonsensical things. That's why the housewives have lost that discretion to know that they have to be extremely alert and sensible and wise.
परम पूज्य श्री माता जी, आज के इस आत्म साक्षात्कार के लिए हम सभी आपके जन्मों जन्मांतर तक ऋणी रहेंगे। श्री माता जी, जन्मों जन्मांतर तक ऋणी रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, let our every second be guided by your divine wisdom। हम सभी अपने हमसा चक्र के डिस्क्रिशन में हर क्षण स्थापित रहें और आपके सत्य में स्थित हों, आपके बेस्ट सोल्जर्स बने। श्री माता जी, इन आशीर्वादों में आप हमें हर क्षण स्थित रखिएगा। श्री माता जी, आप हमें ये आत्म साक्षात्कार में स्थित रख सके, ऐसी अवस्था में हमें बनाए रखिएगा। श्री माता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। श्री माता जी, हम सभी सामूहिकता में श्री माता जी को प्रणाम करेंगे। कुंडली उठाकर स्वयं के कवच को धारण करेंगे। आप सभी साधकों का हृदय से आभार। आपकी आनंदमयी उपस्थिति के लिए हृदय से आभार। आज का ये आत्म साक्षात्कार से परिपूर्ण प्रातःकालीन ध्यान यहीं संपन्न होता है। जय श्री माता जी।